I have an opening statement which I shall read on behalf of my colleague Gaurav Gogoi and myself, and then we will take some questions. In the last 3 days, there has been a tiresome repetition of boastful claims by the government on how India has surged forward in the last 5 to 10 years. Before the Honorable President's address, the Ministry of Finance put out a 63-page mini economic survey, and today the Honorable Finance Minister gave a speech on the interim budget. Thus, the same numbers have been trotted out thrice in 3 days. Every number has been challenged by economists and domain experts. The FM spoke about youth. She did not speak about unemployment. According to the PLFS and the State of Working India report, the unemployment rate among youth between the age of 15 to 29 years is 10%, rural 8.3 and urban 13.8. Among graduates under the age of 25 years, the unemployment rate is 42.3%. Even when the graduates reach the age of 30 to 34 years, the unemployment rate is still 9.8%. The FM did not acknowledge the rampant unemployment and did not utter a word on how the government intended to address the problem. By deliberate neglect over the last 10 years, the government has destroyed the demographic dividend story and dashed the hopes of millions of youth and their families. The FM spoke about women. The topmost concerns of women are the rising crime against women and widespread unpaid employment. NCRB data shows that crime against women arose by 4% in 2022 compared to 2021. As regards women's employment, the PLFS data show male casual workers earn 48% more than women workers, and male regular workers 24% more than women. Worker to population ratio for urban women is 21.9% against 69.4% for men. Labor force participation rate among urban women is 24% against 73.8% for men. The FM spoke about farmers. Every farmer will tell you a story of how he is unhappy doing farming. The FM did not reveal the number of suicides among farmers, including agricultural labor. The numbers in 2020, 2021, and 2022 are 10,600, 10,881, and 11,290 respectively. The wrath of the farmers was seen by the whole world when they protested against the 3 unjust farm laws passed without consulting them. The FM did not even acknowledge the causes for the plight of the farmers: rising input costs, insufficient and uncertain MSP, biased import and export policy, and crop insurance that is either absent or denied. Under the NDA's 10-year rule, a happy farmer is an oxymoron. The FM spoke about GDP, but she did not speak about the per capita income. She spoke about free grain to 80 crore persons, but she did not speak about India's rank in the Global Hunger Index, or to widespread malnutrition among children, leading to a high proportion of stunting and wasting. She barely referred to inflation, but she did not refer to the fact that food inflation currently is 7.7%.
that real wages for casual workers have stagnated for 4 years, and the fact that there is an increase in the proportion of workers dependent on agriculture. The boasts about establishing numerous educational institutions and aims like hospitals must be pitted against the facts that thousands of teaching posts are vacant in central universities and central government established institutions, especially posts reserved for SC, ST, and OBC. The new hospitals do not have sufficient doctors, nurses, and supporting medical staff or equipment. The allocation in the 2024-25 budget for health is 1.8% and for education 2.5% of total expenditure. None of the boasts can be accomplished with such low expenditure. The FM spoke about minimum government and maximum governance. The minimum government policy, in reality, has undermined federalism, starved state governments of funds, and virtually reduced the third tier of governance, panchayats and municipalities, to ciphers. The overwhelming majority of the people are dependent on the third tier of government for their services, but that tier have been virtually deprived of human and financial resources. Federalism has been considerably weakened by the central government taking over, rather usurping the executive and legislative powers of state governments. The fundamental flaw in the NDA's approach to the economy and governance is that it is biased in favor of the rich. It is a government of the rich, by the rich, and for the rich. The government is either ignorant or callous to the fact that the top 10% owns 60% of the nation's wealth and earns 57% of the national income, and that income inequality has widened significantly in the last 10 years. This outcome is because of the lower growth rate during the 10-year period, as against the UPA period. In the last year of UPA, 2013-14, we left a GDP growth rate of 6.4% and an average growth rate of 7.5%. In the NDA period, the average growth rate has been less than 6%. Since it is an interim budget, I shall say no more. However, the interim budget and what went before in the last 10 years have left us with a lot to talk about in the days ahead. Now I shall request my colleague, Mr. Gaurav Gogoi, to say the substance of my statement in Hindi. धन्यवाद आदरणीय चिदम्बरम जी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार की इस आखिरी बजट में गरीब को खोखले वायदे के अलावा कुछ नहीं मिला। मध्यम वर्ग, उनका तो नाम भी आजकल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अपने बजट स्पीच में लेना बंद कर चुके हैं। और ये जो सरकार है, सिर्फ वे चुने हुए उद्योगपति जो प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब है, उनके लिए है। ये सरकार अमीरों की है, अमीरों के लिए है, अमीरों के द्वारा संचालित है। और यही इस बजट में देखा, गरीब के लिए खोखले वादे और मध्यम वर्ग को तो अनदेखा ही कर दिया है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा किसानों की। किसानों की आय दुगनी करने की वादे तो इस सरकार ने की, लेकिन वास्तविक यह है कि किसान आज भी आत्महत्या पर अपने जिंदगी के आखिरी दिन में ये सोचता है कि मैं अपने आजीवन मैं स्वयं ले लूं। और आंकड़े यही कहती है
चाहे आप 2020 का देखें, 21 या 22 का देखें, लगभग हर साल 10,000 से 11,000 भारत के किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं। और अफसोस की बात है कि उनका उल्लेख इस बजट में नहीं था। पूरे देश के किसान मोदी जी के 3 काले कानून के विरोध में आए और उन्होंने जो साल भर आंदोलन करने के बाद जो मांगे रखी, उन मांगों को भी आज इस बजट के इस वक्तव्य में नजरअंदाज किया जा रहा है। उनकी मांग थी एमएसपी को लेकर कि उसको एक कानूनी दर्जा मिले, वो एमएसपी पे कुछ नहीं। उनकी मांग थी कि जो आयात और निर्यात की जो नीति है वो किसान के पक्ष में होने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं बार बार, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जब भी किसान की फसल अच्छी होती है सरकार किसान के पक्ष नहीं लेती और ऐसे कुछ नीति हाथ में लेती है जिससे कि किसानों को नुकसान पहुंचता है। हाल में ही हमने प्याज के किसानों की दुर्दशा देखी और कोई भी उल्लेख हमें इस सरकार से नहीं मिलता। आज फसल बीमा योजना पूरी तरीके से आज विफल हो चुकी है। किसान बार बार प्रीमियम तो देता है, लेकिन उसको जो क्लेम में जो इतनी सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता उसको नहीं मिलती। मैं किसानों के बाद युवाओं की करना चाहूंगा जो आज बेरोजगारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है। और ये मैं नहीं, ये सरकारी तथ्य कहते हैं। चाहे आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा पकड़े जुलाई 2022 से जून 2023 तक, या स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया का रिपोर्ट 2023 पकड़े, आज जो 15 से 19 साल के बीच में जो युवा है भारत में, उनमें से 10% युवा आज बेरोजगार है। और चिंता की बात यह है कि उच्च शिक्षा पाने के पश्चात भी अगर हम तथ्य देखें, जो 25 वर्ष के आयु में हमें दिखाई देता है, जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें भी बेरोजगारी की समस्या बहुत ही संवेदनशील है और लगभग 40%, 42.3% बेरोजगार ग्रेजुएट आज ये भारत की वास्तविक स्थिति है। जो हमारी आज की तारीख में युवाओं की जो शक्ति हमको और बढ़ानी चाहिए थी, आज उस युवा शक्ति पर ये मोदी सरकार उनके सपनों पर आज बुलडोजर चला रही है। महिलाओं की बात बार बार की जाती है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो आज भी क्राइम हो रहा है या जिस प्रकार से महिलाओं को धीरे धीरे लेबर फोर्स में जो उनका हक होता है कि पुरुष के जितना उनको वेतन मिले या लेबर में उनको और भागीदारी का एक मौका मिले, वो भी आज हम नहीं देख पा रहे। महिलाओं के प्रति क्राइम, आज एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा देखें तो 2022 में 4% बढ़ोतरी हुई है अगर आप 2021 के तुलना में देखें। अगर आप मेल कैजुअल वर्कर्स का देखें तो वो लगभग 50% ज़्यादा कमाते हैं महिलाओं कैजुअल वर्कर्स के तुलना में। लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट भी अगर देखें, विशेष रूप से शहरी महिलाओं के बीच में, तो वो भी सिर्फ 24% ही है, जबकि पुरुषों का लगभग 70% यानी कि 73.8% है। तो महिलाओं को भी जो उनका हक आज की सरकार में, आज के माहौल में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। मैंने युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, किसानों की बात की। जीडीपी में भी बार बार जीडीपी का उल्लेख तो किया जाता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम का उल्लेख नहीं किया जाता। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज तो मिलता है, लेकिन कुपोषण जो आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर हम बात नहीं करते। बच्चों के बीच में जो स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्या है, अनीमिया की जो समस्या है, ये जो सच्चाई है आज देश की, इस सच्चाई को बार बार छुपाने की कोशिश मोदी जी करते हैं। आज महंगाई, फूड इन्फ्लेशन लगभग 7.7% है। ये हमारे भारत के लोगों के लिए बहुत ही
मुसीबत और बहुत ही मुश्किल है, लेकिन महंगाई से जो राहत आज देश को मिलनी चाहिए वो राहत मोदी जी नहीं दे पा रहे। उच्च शिक्षा की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन इसका उल्लेख नहीं करते कि सारे उच्च शिक्षा के संस्थानों में आज हजारों की तादाद में शिक्षकों का जो पोस्ट है वो खाली है। और बहुत ही हमें दुख हुआ कि जब हम वो खाली पोस्ट देखते हैं तो उसमें से ज़्यादा पोस्ट वो हैं जो SC, ST और OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछले वर्गों के लिए जो पोस्ट रिजर्व्ड किए हुए हैं टीचिंग के, वो हमें खाली दिखाई देते हैं। तो ये सरकार बार बार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछले वर्ग की बात तो करती है, लेकिन उनका जो हिस्सा होना चाहिए टीचिंग पोस्ट में या सरकारी पदों में, उसके बारे में ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही। अस्पताल तो खोल रही है, लेकिन अस्पतालों में ना डॉक्टर दिखाई देता है, ना नर्स मिलती है, ना कोई अगर स्कैन करवाना हो तो उस प्रकार का इक्विपमेंट। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो किसी भी समाज के लिए अनिवार्य है, जितना बजट में मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य के लिए 1.8% और शिक्षा के लिए 2.5% ही टोटल एक्सपेंडिचर का ये जो अमाउंट रखा गया है, ये बहुत कम है और इससे भारत आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये अगर हम यूपीए की तुलना में देखें तो 2023-24 में जब हमारी सरकार, हमने ये सरकार छोड़ी तो जीडीपी दर लगभग 6.4% था और एवरेज ग्रोथ 7.5% था। अब जब से मोदी जी की सरकार आई है, एवरेज ग्रोथ रेट कम हो चुकी है और 6% से भी कम है। तो ये अभी इंटरिम बजट है, लेकिन इस इंटरिम बजट से भी लोगों की बहुत अपेक्षा थी। ये अपेक्षा आज पूरी तरीके से आज बहुत लोग मायूस हैं और जो उन्होंने अपेक्षा की थी, अपेक्षा के अनुकूल आज इस सरकार ने काम किया है। तो इसी पे हमने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट आदरणीय चिदम्बरम जी ने आपके सामने रखा, उसका अनुवाद मैंने करने की कोशिश की और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो निश्चय ही चिदम्बरम जी आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद। दोबारा के 2013-14 का जो स्लैब था टैक्स का, वो 2.5 लाख का था। अब जो है हम लोगों को, आम जनता को जो है 7 लाख तक का छूट दे रहे हैं। तो हमारी तुलना और जो है अभी की सरकार और पीछे की सरकार की तुलना नहीं की जा सकती। So the new income tax slabs that have been created, that has been pitched by the government in the Prime Minister FM speech, that the new income tax slab in which relief is given up to 7 lakhs is a SOP. That relief, you can translate it if you want. Yeah. That relief was given last year. This year, the rates have not been changed. That relief was given last year. But we have shown calculations that for many categories of income taxpayers, the old system is better. So what did they do? What did they do last year? They made it mandatory to switch over. And if you switch over once, they said you can't switch back. Therefore, they are forcing people into the new system. That is their right. But we have demonstrated by table, by showing in the calculations that for many categories of income taxpayers, the old system was better than the new system. आदरणीय वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स के संदर्भ में जो कहा उसमें कुछ नया नहीं था। ये पिछले साल के बजट में इसका विवरण था। और अगर आप आम जनता से पूछें तो बहुत से लोग पिछले टैक्स स्लैब में रहना चाहते हैं क्योंकि उनका एक अनुभव रह चुका है और इन पिछले इनकम टैक्स में उनको बहुत सी सुविधाएं मिलती थी। जो नए टैक्स स्लैब जिसका सरकार ने प्रसारण किया वो सुविधाएं नहीं मिलती। तो बहुत से लोग, आम जनता और हमने भी अपने अध्ययन में देखा कि पिछला टैक्स स्लैब वास्तविक में आम जनता के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। इसके पश्चात भी, ज्यादा सुविधाजनक होने के पश्चात भी, इस सरकार ने पिछले 1 साल से मजबूरन
लोगों को नए टैक्स स्लैब में जाने के लिए कहा है और बार बार ये निर्देश दिया है। ये लोगों की स्वतंत्रता और लोगों की जो उनकी जो ख्वाहिश थी कि पुराने टैक्स स्लैब में रहकर वो उनको ज़्यादा सुविधाएं मिले, उसके खिलाफ है। और हमने भी अपने अध्ययन में देखा है कि लोगों के लिए पुराना टैक्स स्लैब ज़्यादा अनिवार्य है, लेकिन ये सरकार की स्वेच्छा है। लेकिन सरकार ने कुछ नया मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स के राहत को लेकर इस इंटरिम बजट में नहीं कहा। If they were fair, they should leave the choice to the income taxpayer. The income taxpayer should have a choice of either sticking to the old system or the new system. Why are they compelling, forcing people to go to the new system? जैसे कि कहा गया है कि लोगों को मजबूरन नए टैक्स स्लैब में धकेला गया है इस सरकार के द्वारा, और लोगों की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने अनुसार उनके इनकम और उनके प्रोफेशन को देखते हुए वो अपने अनुसार खुद चयन करे कि वो पुराने टैक्स स्लैब में रहना चाहते हैं या नया टैक्स स्लैब में। ये सरकार अमीरों की सरकार है और विकास दर धीमा हुआ है, ये आप लोग हमेशा एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि विधानसभा के चुनाव में बढ़त बीजेपी को रही है। और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस कल प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त किया और आज वित्त मंत्री ने व्यक्त किया, ये इंटरिम बजट है और पूर्ण बजट यही सरकार लेकर आएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? और इंडिया अलायंस को कितना कॉन्फिडेंस है कि अगला बजट आप लोगों को पेश करने का मौका मिलेगा? This question has nothing to do with the interim budget. This question is a larger political question. Nobody votes on one issue. We maintain our charge that this government is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government has practically forgotten the bottom 50% of the people of India. We will take this message to the people, but the people have several messages coming to them. Economic messages, political messages, religious messages, cultural messages. What message will prevail with which voter, I cannot say. But we hope that the people of India recognize that their economic situation could have been considerably better. It's worse because of the 10 years of NDA government. आपका सवाल विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव में मतदाता बहुत से विषयों को देखता है। आज हम सिर्फ आर्थिक विषय की बात कर रहे हैं और ये सच्चाई है, क्योंकि अगर आप आर्थिक असमानता देखें गरीब और अमीर के बीच में, तो ये सच्चाई है कि अमीर और अमीर हो चुका है, गरीब और गरीब हो चुका है। इसको कोई नकार नहीं सकता। और ये डाटा सरकार का के पास भी है और ये डाटा यूएनडीपी अन्य विशेष अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के पास भी है कि असमानता, वाइडनिंग इनकम इक्वालिटी भारत की एक सच्चाई है। करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, नंबर ऑफ बिलियनर्स हैव इंक्रीज्ड, but the poor have remained worse off because of inflation. और जहाँ तक बात लोकसभा की आती है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की अहंकार है कि उनको लगता है कि जनता उनके पक्ष में है, जनता के बीच में वो गए नहीं हैं। तो ये सरकार की अहंकार भविष्य में बहुत महंगा उनके लिए पड़ सकता है। जनता जनार्दन है, हमें जनता के जनादेश के लिए रुकना चाहिए। लेकिन जो इंटरिम बजट में जो जनता अपेक्षा करती थी, किसान जो अपेक्षा करते थे, महिलाओं जो अपेक्षा करते थे, युवाओं जो अपेक्षा करते थे, मोदी जी के खुद के इतने वायदे थे, 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, अब तक तो फिर 20 करोड़ होना चाहिए था। तो ये जो अपेक्षाएं थी उस पर पूरा का पूरा पानी इन्होंने फेर दिया है। और जैसे कि हमने इस स्टेटमेंट में लिखा है कि अमीरों की सरकार है, अमीरों के लिए है और अमीरों के द्वारा संचालित है, क्योंकि उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे इनकी नज़र है। ये अमीरों की इसलिए मदद करते हैं ताकि फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा इनकी पार्टी में और चंदा आए। और ये वास्तविक है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप देखें तो सबसे ज़्यादा चंदा जाता है भाजपा को।
तो ये उनकी पूरी की पूरी एक साजिश है कि कुछ चुने हुए उद्योगपतियों को मदद कर कर उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा भाजपा अपने आप को और अमीर और धनी करना चाहती है। We welcome the white paper. If the white paper is anything like the 63-page mini economic survey, we will respond to that white paper. We are today responding to the 63-page mini economic survey and the 32-page budget speech. If a 100-page white paper comes, we will respond to that also. We are not afraid of a white paper. Separate what? Ask for a separate country as a result of the situation that Hindi region is imposed on the South India. I cannot comment on that statement. You have to ask him. But it is not the policy of the Congress party or the position of the Congress party to ask for a separate country. That I can deny. For the rest, you have to ask Mr. Suresh. No, we come to that. There's somebody on the हिंदी में बोल देता हूँ कि सरकार अगर कोई श्वेत पत्र लाना चाहेगी तो उसका तो स्वागत है, पर हम सरकार को उन्हीं के आंकड़ों को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी आरबीआई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे का रिपोर्ट आया है, अब उस सरकार मोदी जी उसका रिपोर्ट पढ़ लें। जो जिनका आय 5,000 रुपये से कम है, आज वो कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक अवस्था पहले से और ख़राब हो चुकी है। जिनका आय 10,000 से कम है, वो कह रहे हैं कि आज हमारी आर्थिक अवस्था पहले से और ख़राब हो गई। हाँ, लेकिन जिनका आय लगभग जो लखपति हैं, करोड़पति हैं, वो बोल रहे हैं कि आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी है। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार अमीरों के लिए काम कर रही है और अमीर भी इस सरकार से बहुत खुश है, वो आरबीआई के कंज्यूमर रिपोर्ट में है। श्वेत पत्र से हमें कुछ डराने की कोशिश ना करें। अब 10 साल हो चुके हैं, हमारा छोड़िए, खुद का जो उन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी में से कितने नौकरी दिए, उसका श्वेत पत्र वो निकाले। Somebody raised his hand there in the second row. Did you? All right, very well. Yes. राष्ट्रपति के भाषण में भी ये बात रखी गई कि पिछला जो साल था उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही भारत, और एक आईएमएफ की रिपोर्ट का भी हवाला दिया जा रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगले साल की रहेगी बाय द रेट ऑफ 6.1%, लीविंग बिहाइंड चाइना। सो व्हाट डू यू से अबाउट? We have explained it several times that the fastest growing economy is not a badge of honor. China's GDP is 5.5 times more than our GDP. If they grow at say 3%, in order to match their annual growth, we have to grow at 15%. 3% on a base which is 5 times larger is not equal to 6% on a narrow base. So don't talk about GDP growth. Talk about the per capita income growth. If the GDP is growing at such a high rate, why is the per capita income growing at half that rate? One of those two numbers is suspect, isn't it? If the GDP is growing at 7%, why is per capita income growing only at 2 or 3%? Please ask the Honorable Finance Minister that question. If the total GDP is growing at 7%, why is per capita income not growing at the same rate?
Yes, if that is all, thank you very much. Yes, yes, last one question, yes. So, your response on the entire bit between there and Paytm and RBI has banned the See, deposit ban. I don't know the details. If RBI has taken some action, there must be some reason, but unless somebody examines those reasons or we see Paytm's response to RBI, we can't comment on that. We can't comment on that. But I believe that Paytm provides a necessary competition to payment aggregators. Paytm is an important payment aggregator. If there is something wrong, of course, they will answer that. But I think we must have as many payment aggregators as possible so that there is competition in the market. I am a firm believer in competition. Okay. Thank you very much. Very kind of you. न्याय का हक मिलने तक।